Hi, good morning. Let everyone come. Share screen. Here we go. Started joining. Okay, let everyone join. We are early, like always. So, आ जाने दो सबको. And where is my basket? Okay, so there we go. Start. Okay, then start. Okay. So, okay, meantime, people will keep joining. We'll start. Okay, so we are starting a little late, but 10 minutes. Yeah, yeah. Okay, so let's go to Nifty first. Okay, so Nifty daily it is interesting. It has got upper band, hammer, and 60 resistance. So now we need to see what it does here. And second thing is this is a gap down. By the way, it is closed here, and here you can see it is a bear separating line. Okay, so bear separating line. So this is entirely a gap resistance. ओके तो थोड़ा बहुत वहाँ पे इश्यू है ओके hope everyone is able to see the screen and listen to me without any issues right कोई issues नहीं ना आज नहीं सर okay परफेक्टली क्लियर okay अरे ये क्या हो गया मेरे ही मेरा ठीक है okay so this is where we have taken support here and we have a small candle here ये थोड़ा इधर okay so this is what we are now so we need to now cross this entire gap which is 16500 के आसपास और फिर और एक गैप है इधर 16550 तक फिर और एक गैप है 16600 तक so unless and until we go above 16700 there are going to be gap resistance everywhere then 17100 has got some gap so काफी इसमें है issues. The only plus point which I see is we are again, almost at this level. So that is a trend line breakout. Okay. So this gives us some edge over things. So we have now broken this downtrend and we are on the upside. But we need to be careful कि ये 60 resistance cross करेगा कि नहीं करेगा. ओके सो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखोगे तो हैमर के बाद भी एक बुलिश एंगल्फिंग है बट दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड गैप रेजिस्टेंस ओके सो इफ दिस गोस थ्रू एंड वी कम टिल ऑलमोस्ट दिस लेवल 16600 अगर आ गया ना तो ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था ना उसमें भी ब्रेक पॉइंट आ जाएगा एंड वी माइट देन क्रॉस दिस तो यहाँ तक का एक मेरे को टारगेट दिख रहा है फॉर निफ्टी okay on weekly basis if you go to see it has taken 40 support it is now going up so a hammer was at 40 and now it is bounced so weekly at least 20 ma if you look at as the target and about 20 ma this various gaps are there okay so we'll have to see now what market does at this level okay and secondly is yes there can be here a googly okay googly in sense if this resists 60 there can be a bigger fall okay
So if it resists 60 and even this resistance is here at the price around 16,550. Okay. So if you see a resistance at this level, okay, यहाँ पे अगर resist करता है और यहाँ से गिरता है तो पूरा month अगर बाद में 20 MA के नीचे भी चला जाता है, that means it is going to resist 20 MA and 60 simultaneously. Okay, so that means it's still, some bad news for the market, and we might see some downfall yet in the market. So we need to be very cautious कि ये 60 यहाँ का 60 का क्या करता है. See, daily 60 मेरे को इतना problem नहीं देता है, but main thing is 60 on monthly can be a range shift. Okay, because see, it has remained above 60 for so many months. Now it has broken 60, and this can be the first bearish range shift. Okay, so this is where we might see some issues in the market. Can we short losing basis? So I would suggest let it resist and then you can short. Okay, पहले एक बार उसको हो जाने दो, 550 तक जाने दो, वहां पे देखो क्या करता है. Okay, and then you short. So normally do not just short looking at the pattern, you need confirmation. So wait for that confirmation. If during the month after it crosses this and it goes below 16,200, short with that high of that candle as your stop loss there, because then it is saying that I am resisting and I am going down. Okay, don't do anything prior to that. And I don't know whether which user you are, because I see you as Zoom user. I would just say simply follow top bottom for entry points. Okay, so और कुछ करने का जरूरत नहीं है. We don't need to expect anything in the market. Follow the system. Okay, I think that will be more than sufficient. Top bottom is doing phenomenal. So I would just suggest that only. और कुछ अपना मत use करने का. Okay, confirmation from top bottom would be much more better. Okay, so let's write down on this. This is 16,000. ज्यादा 2 हफ्ते में कुछ ज्यादा मूव इतना नहीं दिया है इसका. 16,225 just 500 points in 2 weeks. Daily doji at price resistance but gap support and almost near to 60. Almost at 60 resistance. देखिए बुलिश पियर्सिंग नहीं है, engulfing है अभी तो. Okay, just crossing 40 or above 40. Okay, so this is 40 and monthly group 20 MA and RSI near to 50. So now it is around 57. So monthly we need to be careful. So monthly around MA 20 and can result into first bearish range. Okay. So this is where we are. Resistance is now very clearly 16 to 50. Seven, 11, make 16 better. Yeah. And then 16,950 we saw it. Okay, so this is where we have resistances. Now 16,000 is going to be one of the support because that is a psychological mark. Okay, 5,800, and we can select. This we have support levels here.
Now let's go to Bank Nifty. बैंक निफ्टी का क्या हाल है? वो भी सेम ऐसी मंथली पे तो उसका भी सेम हाल है, और ये तो कन्विंसिंग कि 60 के ऊपर गया भी नहीं था. ओके, so that is where it is now. 20 में एंड गैप दोनों है इसको. ओके, यहाँ पे गैप भी है उसको 35,300 के आसपास. सो 400 के ऊपर में एक रेजिस्टेंस है इसको तुरंत ही. देन देयर इज रेजिस्टेंस अराउंड 36,000. So weekly basis there are few resistances, and here it is a doji at 60. Huh? See, this is cross 60. 62 का ऐसा ही है. So this is another point that अगर हम इसके ऊपर में निकल गए तो इसने भी एक higher top मार दिया. So 36,200 is going to be very crucial for even Bank Nifty. Okay, so maybe around 1,000 points from here. That we'll have to see whether it is able to do it, या इधर एक black candle बना के it gives you a bearish island reversal type. Okay, so that we'll have to see, because ये भी एक resistance पे ही है अभी. There is a price resistance here, you can very clearly see that. Okay, so support, and then broken with it, then again getting into support, broken with a shooting star here, and then going down. Okay, and now it is coming back here. So can this be the first CIP, or will it knock and get up? Monday pata chala. Okay, so this is where we are looking the indices to be. Okay, so this is looking like, knock. Am I allowed inside? Then I might go till 36,200. If I'm not allowed inside, I might start falling, and then this can be the range, because there is a huge gap up here. Okay, so यहाँ पे वो range में consolidate होना चालू हो जाएगा. Okay, so let's write down again. Yeah. Candle is looking tough अभी के लिए, but खाली 9 दिन हुआ है तो क्या सोचेंगे इसमें. तो ये भी मंथली भी देखो गैप रेजिस्टेंस पर. ये भी 35,600 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक एक गैप है. दूसरा गैप देखो वही है 36,100 के आसपास. So it is now in the gap zone. Okay, so we are now in the gap zone for the Bank Nifty. So let's write down that. Okay, so this is what we are. Bullish diverging confirms and now need to close, and 35,500 the target. So this is something where we are moving towards. Okay, so that is where we saw the target also almost 35,500 जो था वो almost कल आ चुका था. 200 300 के आसपास से वापस नीचे आया. Okay. So now bullish candle at gap and MA20 resistance. Okay. This side took 47. And the bullish candle same is the. I'm just going to copy this.
Okay, so this is where we are on monthly. Now resistances, see the 35,500, 35,850, 36, and support like that, 34,800, consolidate further, 34,350, जहाँ से breakout दिया, and then 33. So these are your levels in Nifty and BankNifty. फटाफट बाकी सब इंडाइसेस देख लेते हैं. So Nifty IT, the ray of hope, trying to get some breather at support. Okay, so started some movement here, but it is already below 60. So 50 RSI and some support at 50. Weekly at gap resistance and below 40. So it's either 40 resistance. Okay, and there is no bullish divergence here, by the way. देख लो ये 29.94 है और ये 28 है, तो डाइवर्जेंस नहीं है. इसको मतलब है कि ये एक रेंज शिफ्ट मारा इधर, it is now still resisting 40 and gap. This is still looking bad to me. And here also, if you look at it, it is at gap resistance, बहुत बड़ा gap resistance. Okay, it's not showing you any still improvement on IT sector. Okay, so 28. कल का TCS का रिजल्ट खराब होने से फॉल होगा तो नीचे जाएगा. But TCS results also bad, huh? Maybe so. We are not much concerned with the results, but चार्ट पे ही मुझे दिख रहा है कि वो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है. ओके, एक मिनट. ये अच्छा, आर यू एबल टू नाउ हियर मी क्लियरली? बिकॉज आई थॉट मेरे को आपका एब्सोल्युटली क्लियरली इस बार बहुत अच्छा है. वीडियो ऑडियो बोथ आर वेरी गुड, एक्सीलेंट. थैंक यू. ना बिकॉज मेरे को इनका जो आवाज था ना टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में, आई हर्ड इट फ्रॉम माय लैपटॉप रादर देन माय हेडफोन्स. आई थॉट आई एम नॉट कनेक्टेड आल्सो माय हेडफोन्स, बट नाउ इट इज क्लियर. ओके, सो नाउ लेट्स पुट दिस इनटू. Okay, so IT does not look good to me. So we are still, struggling. See, ये 2 हफ्ते में ज्यादा मूव भी नहीं हुआ. Okay, 28,250. So this is where it is bearish. Dark cloud cover पे नहीं बता, bearish candle above 40 weekly. It is also having 40 resistance. So series of dojis. There are 2 dojis. Series of dojis at below 40 or at gap and 40 resistance बोलेंगे हम उसको. See, I'll be not surprised अगर कल वापस मार्केट नीचे जाए मंडे को. इसके लिए मैंने कल बंद कर दिया है. 1000 पॉइंट के आसपास में आया, टॉप बॉटम भी क्लोज्ड इट. एंड एक्चुअली आई वाज वरिंग कि मेरे को निफ्टी भी बंद कर देना चाहिए था, बट निफ्टी रेजिस्टेड 60. इसके लिए मेरे को भी थोड़ा चांसेस था, बट उसमें खाली 150 200 पॉइंट्स था. सो दैट्स व्हाई आई स्टिल होल्डिंग निफ्टी. तो और भी खराब है. मंथली इट इज टेकिंग मंथली trying to take support at 50 RSI. अगर 50 टूटा तो ये तो गए, 40 तक जाएगा ही जाएगा. Okay, so this sector we can easily look for shorting. Okay, so Nifty IT is one sector for shorts. The FMCG is acting as a supporting role, so you need to understand इसमें short थोड़ा भारी पड़ेगा जब तक action नहीं दिखाते. तो let's see now on this.
पर रियलिटी क्या है? अच्छा, रियलिटी भी देखो 60 के ऊपर आया है, बट अगेन देयर इज अ ह्यूज गैप। आई वुड फॉरगेट रियलिटी। ये तो रियलिटी है ना। हाँ रियलिटी है, वो शोभा डेवलपर और वो सब नहीं वो अच्छा स्टॉक्स। चलेगा, हाँ वो अच्छा चलेगा। हाँ उसी के लिए खाली थोड़ा देखना चाहता था कि किधर अटका ही है। But this is also on the similar. So cup hai, and there is a bounce from cup. So this is looking decent. And so you can buy with this as your stop loss on in the index. So Shobha developer hai, overall reality hai, DLF hai. So we'll have to see on those. If this index goes below this on closing basis, exit those stocks. Otherwise, you can hold them. This is looking decent now. But ये अभी भी resistance पे है, so this is still at the trend line resistance. Okay, it needs to come till here. तो ये और थोड़ा ऊपर आएगा. Let's see. Infra should be similar as Nifty, yes. But ये भी वही है. सब gap क्या केवल there are huge gaps है, छोटा मोटा gaps नहीं है ये सर. इसके लिए थोड़ा टेंशन है. यहाँ पे तो मस्त है, हैमर बना रहा है, but see this. Now this is common in all the indices. Okay, RSI is coming for either bearish range shift or breaking of 60 again. तो ये जब तक ये महीना कंप्लीट नहीं होता ना, कुछ नहीं समझने वाला. Okay, so be very careful with your trades. Mostly keep it intraday only. Now FMCG, now this is one of the thing which is supporting the indices. Okay, so there is a breakout here. Now there is almost till here and it touched almost the highs again. Okay, so this sector, see this sector has touched the high, but if you look at the stocks, no, liver वगैरह, they have not gone anywhere. वो अभी भी 2200 के बीच में है, जबकि उसका ऑल टाइम हाई इज 2800 के ऊपर. So this index is almost as all time high. So what was running in this, they only know. ये खाली इंडेक्स मैनिपुलेशन है. Britannia, I think it went up. ITC, yes, ITC is one of the stock which we are also in buy mode. So ITC is separate, but ये खाली एक ITC इसको लेके जा रहा है ऐसा लग रहा है फिलहाल. See, this is 60 crossed. This is looking good, handsome thing. Here also see ये एक ही इंडेक्स है जो 60 के ऊपर है, and no bearish divergence yet because ये नीचे हो गया अभी. Okay, ये 62 है, ये 66 है. So this is looking good actually. Actually 2500 आ गया है. Okay, I'm not following HUL since long. मेरे को मन नहीं करता है सब स्टॉक्स. अच्छा ये भी यहाँ पे एक इश्यू है. ओके, अगर आप गौर से देखोगे तो here there is a shooting star. So again see shooting star retested and there was a huge fall. Okay, तो अगर ये shooting star पे आके ये वापस retest होके fall देगा ना, तो समझ लेना निफ्टी भागेगा, ये सब गिरेगा. ओके, ये बेचारा सपोर्टिंग रोल में ही काम करता है. ओके, सो नाउ वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल कि ये क्या करता है. ये 42,000 के ऊपर निकल गया, न्यू हाई मारा ना एफएमसीजी ने, तो समझ लो निफ्टी और गिरने वाला है. ओके, बिकॉज इवन कोरोना टाइम पे दिस मेड अ न्यू हाई. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ये फटाफट नया हाई मारता है क्योंकि ये इंडेक्स को सपोर्ट करता है. हैमर एट सपोर्ट है यार ये. See, this support line is there. ये जो है पूरा इसके ऊपर में निकल गया ये, and it's supporting here. Need to see very well. And upper band walk almost on all the time frames. So monthly खाली band walk नहीं कर रहा है, बाकी daily weekly band walk भी कर रहा है. Okay, and all time frames are above 60. So it's a golden index in this world. Okay, so 40,000. Yeah, 900 है. ओके, सो अभी चलो बहुत सालों बाद दिखता है ऐसा कुछ गोल्डन इंडेक्स.
कुछ तो आया गोल्डन small candles above and 75. And 16. एक मिनट है किसी का तो चैट है look at it just 2 मिनट दो पहले मैं ये राइट अप खत्म कर दूं and 16 bullish can दो बार अब क्यों लिखा बेटा तुमने ओके now let me see अरे तू आया चाय दे दो I was long enough because of one video you said reverse head and shoulder हाँ yes वो भी है इसमें so it is there over here if you look at it reverse head and shoulder was there on weekly if I'm not wrong I think कौन सा तो मैंने एक इसमें दिखाया था this somewhere was it was not reverse head and shoulder but at least कब ब्रेकआउट है इस पे क्योंकि ये और ये हेड दोनों सेम आए कोई तो स्टॉक में हेड एंड शोल्डर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई तो स्टॉक में हेड एंड शोल्डर है बट यहाँ पे ऑल्सो दिस इज लुकिंग एज दिस सो normally if nifty has to fall now then this is the supporting rule okay तो वो आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा and now this is coming almost towards the high so now be careful here okay ओके तो ये हो गया अभी ऑटो ओके निफ्टी ऑटो ऑटो नहीं पहले मेरे ख्याल से फार्मा आता है ना ओके सो फार्मा इज स्टिल स्ट्रगलिंग ओके इट इज बिलो 60 एंड ऑल दोस थिंग्स खाली एक सिक्ला है जो 900 बना के रखा है मुझे पता नहीं दिस रेजिस्टेंस हैज बीन क्रॉस्ड नाउ so this has got another resistance here ठीक है मतलब ये गाड़ी रुक रुक के जाएगी okay but best part is 40 crossover okay so doji at 40 and now above 40 okay this is looking good current gap is closed so it can come to this level okay so इसमें भी stocks देखने पड़ेंगे for buying and here also it has got space to travel okay यहाँ तक आ सकता है 13,100 या 13,200 तक okay so let's see now okay so 12,450 2 हफ्ते में ज्यादा हिला नहीं है बट उधर का उधर इसके अंदर क्या एनर्जी है ये वीकली पे है और हो गया ये doji okay 60 and upper band resistance and extract another gap bullish candle higher bullish candle cross here I think that's crossed 50 yes at 50 but it is at resistance also so we have to see that
below 50 at 50. अच्छा, ये लास्ट मंथ में उसका ओपन हाई सेम था, सो लेट्स सी व्हाट इट डिड ऑन दैट ओपन हाई. सी अगर ये स्टार्टिंग में ओपन हाई सेम रहता है ना, सी एंटायर मंथ इट रिमेन्ड दैट वे. सो दिस आर द स्टॉक्स वेयर you can see it as mainly to short. Okay, and now I'll also show you Reliance. मुझे दिखा था Reliance में ओपन हाई सेम था लास्ट वीक. ओके, सो उसने भी क्या किया देखो पूरा लास्ट वीक में. Okay, so that is somewhere you should be able to track those type of stocks. Okay, now Nifty auto बचा एक ही फटाफट ऊपर पे है. अच्छा, एक बार खाली VIX देख लेते हैं. See, VIX is now falling around 18. That means if it now comes towards maybe low of this, we might get into stability. तो फिर मार्केट चार्ट्स के हिसाब से चलेगा. चार्ट ने बोला बेरिश तो बेरिश, तो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा, सो इंट्राडे में कमाने को थोड़ा कम मिलेगा, बट देन स्विंग ट्रेड्स कैन बी टेकन इजीली. ओके, बिकॉज देन स्विंग ट्रेड्स विल स्टार्ट मूविंग. तो जरा ध्यान रखना इस पे. ओके, इट इज शोइंग एंड दिस हैज गॉन बिलो 40. अरे वाह, एंड बैंड वॉक भी कर रही है. ओके, सो थोड़ा इसका साम्राज्य को हिला दिया है. Let's see auto. So auto made a new high, was not able to sustain, and we saw the all fall down. Okay, so now we need to see whether it takes support here with the previous high or it starts moving down. Okay, so this is where auto is right now. Band walk over here, and this is also breakout. So ये भी अच्छा decent लग रहा है. Okay, so it made a new high and it is now around that level. So we need now the monthly close at a new high. Okay, so this is also golden index. In fact, this is a diamond index. It's also an all-time high. Okay, so अभी वापस थोड़ा golden diamond चालू हो गया है. I like it. Okay, आपको खुश हुआ, ये कुछ तो आया. 12,124. Okay. Hey. Bearish candle at ATH. ATH is all-time high. Okay. बाप रे, उल्टा लाल दिया मैंने. But yes, ATH support. Weekly bullish candle above 60 and band walk. Okay. Also above 60. Monthly bullish candle above 60. So this is where we are, and let me write here diamond. हाँ, कोई तो कुछ तो बोला, मेरे को समझा नहीं है. कुछ क्वेश्चन रहेगा मेरे लिए तो मेरे को वापस पूछो, समझा नहीं मेरे को. Okay, so now let's go to the stocks. चाय आया पी.
शाबाश. Okay, so now let's go to the stocks. Let's start with cement. मेरे को तो पहले सबसे पहले एलएनटी देखिए, इसने मुझे कल बहुत धोखा हुआ. एलएनटी ठीक है, वो भी देखता हूँ. ये देखो, ये एक हफ्ते से रखा हुआ, कल खुलते ही 15-20 रुपया बढ़ा, मैंने बेच दिया. उसको कितना बढ़ा, 5-6% गया. अरे बाप रे, मतलब कमा के निकले ना आप. लेकिन हमको तो 15 रुपया मिला, उसको गया 60 रुपया. ठीक है, वो देख लेते हैं. देखो ये आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं बेचा ना, सो हैप्पी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ. and then when you see there was a more bigger profit. रुकने का नाम ही नहीं लिया, चलता 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 ऊपर चलता चला गया. ठीक है, वो देख लेंगे. सीमेंट ही देख रहे तो पहले वो सब उसमें भी आ जाएगा वो. पर नाउ दिस इज अ क्लियर शॉट. वीकली क्या है? वीकली भी डोजी एट 20 में, तो बिलो 20 में ये वो शॉट. ओके, monthly भी ओके, so this is fair enough. Okay, short below this. ये रेंज के नीचे शॉट करना पड़ेगा. Okay, so it's around 60 points gain and around 35 to 40 points this thing. So I feel it is still worth a trade. Okay, so ACC 2175. मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है. Okay. So sell below. 2160. Okay. It's 20. And it's going to be T1. Okay. So this is what you see. उल्टा हो चुका है. Then let's go crossing. ये भी 60 को रेजिस्ट किया है, तो ये भी शॉर्ट है, लेकिन इससे बेटर शॉर्ट एसीसी है कि इसको गैप सपोर्ट बहुत है, एसीसी को नहीं है. अरे बाप रे, ये भी शॉर्ट है क्योंकि ये भी अभी गैप पे आ गया है. बट इसको आने देना चाहिए यहाँ तक. इट इज राइट नाउ एट रेजिस्टेंस. ओके, लेट्स सी व्हाट इट डज. बट ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है भाई साहब. लाउड मूव के साथ ऊपर आ चुका है. Okay, is it has crossed the range. It is now above 65. Weekly क्या क्या बेटा तो ना. अच्छा, weekly 20 में का resistance पे है and price resistance है. Okay, so this is now looking to be gap resistance on monthly as well. Okay, so there are few issues here now. हाँ, आपको थोड़ा ये रहेगा कि आपको इतना मिला नहीं, पूरा बड़ा डंडी था, बट अभी ये नीचे का साइन दिखा रहा है. It's at resistance, right? That cementing is at resistance. That means हाई सोल्ड एट 1635, फिर वो 1690 कहाँ तक हाई उसका? आई थिंक 80 है, 1680. 88 हाई. I think that is okay. You made money तो कैश में इट वाज, कैश में इसमें फ्यूचर डिस्काउंट है, कैश में बहुत ऊपर था. इट वाज क्रॉस 1700. See, I can understand where you booked your profit looking at this gap resistance. Yes. हाँ, वो ठीक है ना. अभी कभी कभी गैप भर जाते हैं, कभी नहीं भर. वो ठीक है ना, वो रिस्क लेने से अच्छा है निकल जाओ ना, जो मिलता है जेल में एक बार. ठीक, that is okay.
तो सीमेंट, नाउ लेट्स गो टू रिलायंस बिकॉज आई एम नाउ थिंकिंग कि ये भागेगा, ओके, या तो बहुत गिरेगा. Okay, it is looking like very much similar as a bullish divergence here. Okay, see 37 and this is 36. Okay, but mainly one mistake that we do while looking at the charts is, see, this candle has to be considered, because it's a white candle. We normally don't consider it, but the low of this is here. This low is here. ओके, ये और ये क्लोजिंग बेसिस में ऊपर आ गया है. बाकी नॉर्मली अगर ये क्लोज इसके नीचे होता है तो व्हाइट का लो के साथ कंपेयर करना पड़ता है हमको. ओके, सो थोड़ा अलग फंडा है, बट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये मेरे को ना, इसमें मेरे को फ्लैग दिख रहा है कि ये शायद इसके नीचे गया ना, रिलायंस 2360 के नीचे. सी इफ इट गोज बिलो दिस, जस्ट शॉर्ट इट. एक बार ये छोड़ा ना उसने, तो ये जितना ऊपर है ना उतना डंडा नीचे आएगा. ओके, इसमें ये इधर तक आ जाएगा 200 पॉइंट. इट माइट कम टिल 2180. ओके, सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन रिलायंस. ओके, हाँ हाँ ओके, सो वी सॉ दैट ऑलरेडी. वीकली इज आल्सो अराउंड 40 एंड एट रेजिस्टेंस. तो ये भी मेरे को थोड़ा सी शूटिंग स्टार जैसा है वीकली. I am not seeing markets growing much, but let's see क्या करता है ये, क्योंकि वो विंडफॉल ने इसका विंड बजा दिया है. Okay. So now we need to see what it will do. It's not looking that decent. वीकली में उसका टारगेट कितना आ सकता है? मे बी 2250 तक आ सकता है. ये गिरेगा तो वीकली में भी चांसेस है बड़ा. वो हाँ, same windfall is same for both. But ONGC I normally don't see because of the lot size is too huge. Okay, and ONGC तो ऐसे भी मैं देखता नहीं. वो PSU stocks तो I am out of it. Okay, so this also does not look good to me. इसके नीचे शॉर्ट करो यार इसको, रिलायंस को. इधर है मेरा रिलायंस. So 360. So 610 रुपया. Okay, so not a bigger mistake. ये क्या है बेटा? ऐसे लिखने लगा तो क्या करता है? ऐसे ऑलरेडी खड़ा इसको. So we now have two trades here, Reliance short and ACC short so far. Okay. Okay. Now let's go to the Asia वाला पे. एशियन पेंट भी बारिश में कौन कराता है? हाँ राज, ऐसा सोचेंगे तो पूरा मार्केट शॉर्ट हो जाए. ये अच्छा दिख रहा है. हाँ, ये देखो राजू, ये है तुम्हारे दांतों की बनावट. ये देखो बेटा, शूटिंग स्टार और एक डोजी, लेकिन ये 60. और कितने टाइम से इसने 60 क्रॉस नहीं किया? देखो सिंस जनवरी ये साल ये भाई साहब 60 के ऊपर जा ही नहीं पाया. ओके, सो नाउ you can do both the things, but see यहाँ पे थोड़ा इश्यू है. ये देखो कैप सपोर्ट भी है इसको, और ऊपर में रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस है उसको, शूटिंग स्टार का. सो 2930 के ऊपर बाई है, दोनों कर सकते हैं ये. then it can go straight till 3050. Okay,
थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है मेरे को। ओके, ये भी 20 mm को भी रेजिस्ट कर रहा है, मैं जगह है इधर तक का, सो जाने दो। Okay, so there it is showing some resistance, but we need to see whether it goes down or not, because see, this is a good bullish candle है, ये doji है लेकिन ये ऊपर वाला है, तो नीचे लाके इतना ऊपर खींचा उसको, तो मेरे ख्याल से कल एंड में बहुत मार्केट को खींचा था, उसी में खींचा है या क्या खींचा है वो देखना पड़ेगा। जैसे कैप के भी ऊपर लेके आया, ऐसी कैप सपोर्ट है उसको, वो कैप से ऊपर लेके आया। So I'm not liking this for short. Okay, Reliance short below black, हाँ वो कर सकते हो easily, so that is what we did. So 2360 के नीचे ऐसे भी शॉर्ट हो, तो वो अच्छा ये अभी, okay, so now so we should be, let's see TCS के शॉर्ट्स का ही देख रहे तो अभी वही सब चालू करते हैं वापस। TCS की तरफ है, वाह बेटा वाह, ये see this is looking very good as of failed flag pattern है इसमें। ओके ओके, स्टील भी देख लेंगे एक बार, बट सी दिस एकदम ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन पे ही शूटिंग स्टार थोड़ा इधर मच कर रहा है, इसके नीचे शॉर्ट कर दो। ओके, इसी दिस इज कॉल्ड बैडमिंटन नेट। ओके, ये फिर ये इधर तक आया, देन इट वाज सपोज टू गो अप, it failed. Okay, so this is now going to not make a flag failed. Okay, so now the chances of badminton net. Okay, तो अभी ये इधर से इधर तक आ जाएगा, तो ये हम बैडमिंटन नेट बोलते हैं। Okay? ये हमारा खुद का पैटर्न है, बाहर जाके बोलो मत बैडमिंटन नेट करके भी पैटर्न है। This is looking to be short below 3240, ये क्या है TC। Okay, so TCS can be also short, इधर है, इधर लिख रहा था। मतलब सी अब तक स्टॉक्स तो सब शॉर्ट मोड में है। ओके, ये बाई इसके ऊपर में ही होता है, तो उसके ऊपर में तो बाई करो भी मत, देखो इसके ऊपर में गैप है, तो उधर फिर अपर बैंड और 60 सब आ जाएगा, कहाँ आने वाला है ये, 100 रुपया ऊपर कब आएगा मालूम नहीं है। तो 3270 इज द प्राइस। सेल बिलो करना है हमको, सेल बिलो क्या 3240, so we'll keep 3235 और 5 रुपया, ठीक है चलो। Target can be what, the lower band or the support, हाँ वही है ना, 120। Okay, and the sell is going to be your 3290, 1500 क्वांटिटी, अरे 150 क्वांटिटी तो ठीक है, नथिंग मोर। ये चिली एफसी, now let's see इन्फी, फिर टाटा स्टील पे जाता है, ये इन्फी भी देखो, लेकिन ये देखो 60 के रेजिस्टेंस पे आ चुका,
यहाँ पे क्रॉस ओवर है बट इट इज ऑल्सो एट गैप रेजिस्टेंस स्टिल हियर, तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कंफ्यूज स्टेट में बेचारा। ये तो गया, सी 40 रेजिस्टेंस पे भी है, सो ओके, मेनली वी आर लुकिंग एट आईटी सेक्टर एंड शॉर्ट सेक्टर ओनली फॉर नाउ। माइंड ट्री विच आई डोंट माइंड, ओके, वो भी वैसे ये स्क्वीज में है बट इट इज नॉट गिविंग एनी क्लियर डायरेक्शन बिकॉज बीच में देखो आ रहे से बेचारा भी मझदार में फंसा हुआ। LTI, LTTS, ये भी ऐसा ही है, TS, ये ठीक है, बट ये काफी वॉलेटाइल है, इसके लिए मैं इसको चूज ही नहीं करता हूँ। But I just wanted to see all the IT stocks. So this also has resistance just above. Okay. So ज्यादातर इसको भी नहीं दिखा रहे, ये सब 640 के नीचे चल रहा है on the higher scale। ये क्या? इसमें है ही नहीं है तो इसको देखो ही मत, ये देख नहीं सकते हम लोग। ओके, कुछ है, ठीक है, जाने दो। Okay, so we saw IT, we saw Nifty के key stocks। Okay, तो अभी बैंक निफ्टी खत्म करते हैं। ये चिट्ठी एफएससी बैंक, ये इसको बंद किया कि नहीं? Oh, so this is about 16। This I wanted, ये अब तक बंद नहीं हुआ है। ओके, सी ये फ्री ट्रेड है, ये फ्री ट्रेड को कंसिडर मत करो, ये गैप अभी भी ओपन है यहाँ पे, सो वी आर एट गैप रेजिस्टेंस। ओके, ये 20 में क्रॉस किया इसने बट अप्रोचिंग अनदर गैप हियर, कितना अच्छी रीसिंग है। इसको ना शॉर्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी गैप है नीचे भी गैप है। 60 ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे तक आएगा, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू कम टू 1340 लेवल्स, बट कंडीशन अप्लाई। ओके, सो जाने दो उसको। ओके, सो HDFC डज नॉट लुक गुड, HDFC खाली वो भी सेम 60 रेजिस्टेंस, ये तो शॉर्ट क्लियर शॉर्ट दिखा है मेरे को। Okay, so I will avoid, even see this is a clear shot, okay, you can expect this, but risk reward थोड़ा ये है, 33 से लेके मतलब 65 रुपीज है एंड 33 से 70 है। okay, 65 और 30, ओके ठीक है, कैन बी टेकन। HDFC बैंक खाली HDFC। ये चौथा ट्रेड भी शॉर्ट ही मिल रहा है अपने को, मतलब पता नहीं चल रहा है कि मार्केट करेगा क्या। कल ऐसे बंद किया जैसे शहनशाह, मैं निकल के रहूंगा बाहर यहाँ से, और अभी दिखा रहा है कुछ और ही। 22 ओके, आने दो मेरा 230, ठीक है, उसके नीचे ओके, you can expect 2165। इसका 65 है ना, 65 ओके। Asian Paints and Reliance already done, we don't need it। Okay, so now let's see काउटक क्या बोलता है। काउटक, उड़ी बाबा, ये भी डॉजी एट गैप एंड 60 रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे गैप सपोर्ट भी है तुरंत, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसको अभी छोड़ देंगे हम, चलो
दूसरा कौन सा बैंक है? कोटक, HDFC, फिर इंडसइंड वगैरह तो मैं नहीं देखूंगा। दूसरा कौन सा प्राइवेट बैंक तो छूट गया है मेरे से। एक्सिस, और ये भी वही है सब। देखो सब एवरीथिंग इज एट 60 रेजिस्टेंस है। तो बिंदास शॉर्ट करके बैठ जाओ। बैंक निफ्टी तो चला नीचे वापस से। ये एक ही मर्द है, ये एक मर्द, लेकिन कितना लेके जाएगा भाई? ये देखो, this is also at shooting star resistance by the way, but look at the RSI. So this is looking good, this is looking good. Okay, हाँ एक्चुअली वही है। ICICI and SBI is pulling, so PSU banks are pulling actually. बाकी प्राइवेट बैंक में तो कुछ दम नहीं है। अगर मैंने कहा SBI टाइप कर दिया गलती से, किसी को स्क्रीन पे चला गया। व्हाट्सएप में SBI आती है, मैंने एंटर भी कर दिया। This is what happens. हाँ SBI जाने जा रहा है। ओके ठीक है, जाने जिसको जिधर जाना है। ये भी अटकेगा, लेकिन ये सब गैप पे है, तो गैप के साथ बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा टेंशन आता है। तो जरा टेंशन उसमें जरा अवॉइड करना। हाँ वो तो है, बट माय पॉइंट इज कि अभी एक नया बॉटम बनाना चाहिए, क्योंकि गिरना चाहिए अभी वापस। ओके, दो ट्रेड हम लोग ने ले लिया है ऑन द अपसाइड। I think we got almost what 1700 points in two trades, which is good enough in 2 weeks time. I think so. That is good. ठीक है, तो अभी कौन सा बाकी है? बैंक हो गया, निफ्टी हो गया, IT हो गया। अच्छा ये तीनों बाकी है, तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिलीवर। हाँ बेटे, तुमने तो बेरिश डाइवर्जेंस बना दिया है बेटे। 73 25 71। okay, so 3 bar bearish divergence on Unilever. Again you short below the low, and you can expect it to come till almost 100 points down from it. So 60 के आसपास में तुम्हारा शॉर्ट ट्रिगर होता है। ओके, सो 60 नहीं 75 बोल सकते हो। 70 to 70 is the target, and your कुछ ज्यादा नहीं है यार, कर सकते हैं। चलो, मतलब सब आज जो भी मिला है सब यही मिला है। तभी देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैनिपुलेट नहीं करते हैं। लेकिन शॉर्ट मिल रहा तो मैं भी क्या करूं? भाई उसका हाई है। ठीक, also looks bad to me. Quota का भी there is no more any trading quota. Okay. क्या बोलता है? बिस्किट खाओगे, हिमक्रीम खाओगे, ये भी क्या है? ये भी वही है, यही तो है वो 73 और 73.5, 73.8, और इसमें भी है, इसमें भी है, एंड इट इज एट प्राइस सपोर्ट। सो वी हैव टू सी। ओके, सो वी हैव टू सी ये क्या करता है। छोड़ दो इसको अभी, बट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा है। ओके, जिसमें वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम। ओके, सो यस, नीड टू बी वॉचफुल। ठीक है, दूसरा कौन सा सेक्टर बचा? ऑटो एंड फार्मा। मारुति, मारुति। So Maruti has dropped below this,
Now can come till this level. Okay, so ये भी मेरे को देखो ये 60 के सपोर्ट पे है, एक 60 सपोर्ट लिया, बाउंस किया, अभी क्या करेगा मालूम नहीं है. एंड देन लेट्स सी दिस 71 60 71 87 एंड 69. तो यहाँ पे भी bearish divergence है, and that is confirmed also. So it can then come below this. So even ये भी बोल रहा है खत्म. Okay, so I am going to be very very watchful. Okay, on the buy side. हाँ अभी वही है, तो सी मेनली TCS and again M&M lot size is bigger, तो मैं ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ. Okay, but let's see. Yum and yum. Yum and yum. Okay, see this also has got bearish divergence. Okay, but इसने flag complete किया by the way, तो ये दूसरा है. XUV 700 को लेके भागा है बंदा, यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, एंड फ्लैग कंप्लीट किया इसने. सी दिस, द फ्लैग कंप्लीटेड. अभी जिधर जो करने का इसने फ्लैग कंप्लीट करके भागा है, तो ये टेंशन आना नहीं इसको. ठीक है. Okay, so this now looks interesting to me. सब पे bearish divergence है. ऑटो सेक्टर, बजाज ऑटो, हमारा बजाज 60 रेजिस्टेंस एंड कैन गो डाउन. ठीक है, तो है सी बहुत सारा शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, बस हो गया. इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रेड मैं नहीं देख सकता मार्केट को गिरते हुए. मेरा मार्केट महान, अरे बाप रे, ये भी देखो क्या करना चाहता है. ये सपोर्ट पे है, बट ये देखना पड़ेगा इसके ऊपर में भाई है, तो थोड़ा बहुत ऊपर आएगा तो ये एक है. हीरो मोटो एक दिख रहा है. MRF क्या बोलता है वो देख लेते हैं. अरे MRF तो बैंड वॉक दिख रहा है, इसके ऊपर में भाई है. तब तक भाई मत करो, 7600 के ऊपर जा, 76,000 के ऊपर जाने दो. यू कैन एक्सपेक्ट 77 78,000 तक का. लुकिंग गुड, बट अगर डोजी कल बनाया तो फ्लैग बनाने का चांसेस है उसका. हाँ वही MRF. टाटा मोटर्स इफ यू आर होल्डिंग इन इक्विटी, होल्ड इट. उसको मत देखो, 400 रुपए का आइटम को क्या देखते हैं, उसका लॉट साइज बहुत बड़ा है. तो फ्यूचर्स तो भूल जाओ. आई एम होल्डिंग ऑलमोस्ट, आई थिंक है मेरे पास 8,000 क्वांटिटी पड़ा है. I'm not doing anything to it because my aim is next 2 years I am thinking it will double up. 1,000 के आसपास में भाव रहेगा. टाटा स्टील देखने का ना ना. जल्पेश भाई भी केयरफुल है, ये 40 सपोर्ट पे भी आ सकता है. अगर ये तोड़ता है तो अब शॉर्ट करो. Okay, so be very careful, and there is a 3 bar bullish divergence here. Okay, so this is very powerful. तो ये लेवल उसको डिफेंड करेगा ये. तो इनफैक्ट 840 નો પુટ લખીને બેસી જવાય તમારે કરવું હોય ને તો. ઓકે સર, ચાલો ઠીક છે, થેન્ક યુ. વેલકમ. This is looking okay. This also is looking okay. So it is trying to take support at the previous breakout level, sir. So careful with this stock. ये इसके ऊपर में अगर मंथली क्लोज आता है, okay, it is right now at the support of this. Okay, this broken and first support, first CI. Okay, so this is interesting. Okay, so अभी कौन सा बचा, कुछ बचा है क्या? फार्मा बचा है. ITC पकड़ ही नहीं रखो भाई. ITC don't see also. We have already given a target of 350, 365. Okay, so ITC I don't trade on day-to-day basis.
Okay, you can hold it. We are holding it since I think 230, and then we added it to 66. So ITC showed you. Pharma, Mr. Reddy, how are you and where are you? Let's see this. Oh, this is trying to break 60, but it is not been allowed to break 60. Okay. So ये बेचारा काम के बोझ का मारा, लेकिन ये व्हाइट कैंडल ने हमको रुला दिया, तो we can't short because below इसके नीचे short है. Okay, so wait and watch for this. Sipla. Sipla is also ये मझधार में, बस ये देखो मझधार में है, ये छोड़ दो. ऐसा सब आता है तो छोड़ देंगे. डेली वीकली दोनों मझधार है. Okay. So ignore it. I think that's it. So I think we have got 5 short trades, and let's see what Nifty BankNifty does. Okay. Okay. So really sorry, not able to do this regularly nowadays because issue with me is post COVID now everything has started. So my regular ashram life has started, which was shut down during COVID days. So because of that, I'm not able to give much commitment here, and my weekends were actually for my ashram anyways, right? So we'll do it whenever I find time, but what I'll do is, at least if I'm not able to conduct this, I will try to make this entire notepad thing and at least share with everyone. Okay, I can do, because this, if I do alone on myself, it not doesn't take me more than 15 minutes. That much I can do from any place and I can upload it. Okay. So thank you everyone, and let's see how the market turns up on Monday.